Okay. Hello everyone. A very good evening to all of you. This is Ashwin Ramani here from SBI Securities. I hope I'm audible and I hope you all are able to see my screen. Uh, अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो आप मुझे एक कमेंट बॉक्स पे हाई या हेलो करके भेज सकते हो. अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है. So we just wait for a few minutes. I can see that people are joining in. अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो यू ऑल कैन जस्ट लेट मी नो इन दी चैट बॉक्स. तो वहाँ पे एक चैट बॉक्स है और चैट बॉक्स में हाय हेलो करके बता सकते हो मुझे, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है. सो वी जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स. आई सी दैट पीपल आर जॉइनिंग इन. और जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है सेशन, यू ऑल कैन लेट मी नो इन दी चैट बॉक्स. Great. I can see insurance guide is here. Akshay ji is here. Great. Good evening, guys. We'll just wait for a couple of minutes and then we should be good to go with the session. सुनाई दे रहा है मीत जी saying superb. Great. So कैसा चल रहा है मार्केट? So in the meanwhile, जैसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, so how's the markets going on, guys? Debashish ji is here. Mukesh Madhukar, Bagalpur, Bihar, superb. Hi, Meet ji. Satyen ji is here as well. Great, superb. So, कैसा चल रहा है market? So, I think we have some relief today in the last couple of days. I think अगर आप निफ्टी देख रहे हो तो I think 22,800 होल्ड कर रहा है निफ्टी. बट अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप भी देख रहे हो तो जो जून 4th का जो इलेक्शन डे के दिन जो लो बना था, वही लो पे आके आज एक अच्छा एनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है. तो अभी आगे जाके देखना पड़ेगा कि क्या ये एक माइनर क्या ये बॉटम बन गया या ये डेड कैट बाउंस है कि थोड़ा दिन ऊपर जाके फिर से नीचे आए. बट सम इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इन द पास्ट कपल ऑफ डेज. सतीश जी सिंह हाय, विशाल सिंह जी नमस्ते. सो हाउ इज योर ट्रेडिंग गोइंग ऑन गाइस? कैसा चल रहा है? आई थिंक टफ मार्केट्स. आई थिंक अगर सितंबर 24 से ही देखें, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब, ऑलमोस्ट 5 months मार्केट में एक डाउन ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है. बट देर इज सम काइंड ऑफ बाइंग दैट वी आर सीइंग इन द लास्ट कपल ऑफ डेज. बट एट दिस पॉइंट वो बोल नहीं सकते कि ये बॉटम बन गया है और यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, या ये एक छोटा सा माइनर पुल बैक है और उसके बाद मार्केट्स फिर से करेक्ट हो. So that is something that we'll have to wait and watch. But if you can just quickly tell me, जितने भी लोग ऑनलाइन है, कैसा मतलब हाउ इज योर ट्रेडिंग गोइंग ऑन इन दिस टर्बुलेंट टाइम्स? जो मार्केट में जो अभी जो स्थिति हम देख रहे हैं, तो कैसा चल रहा है आपका ट्रेडिंग? आर यू ऑल मेकिंग मनी? आर यू ऑल लूजिंग मनी? आई एम प्रेटी श्योर. आई थिंक अभी तो पोर्टफोलियो शायद सबका डाउन ही होगा. बट या आज हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे. सो टुडे द डिस्कशन इज गोइंग टू बी अबाउट चार्ट पैटर्न्स डेफिनेटली, मीत जी. So okay, so we'll just very bad experience from few days, Satish ji. No problem. I think we'll have to wait and watch and see where how the market reacts from here. ठीक है, चलो we'll just quickly come to the topic guys. So आज का एक काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम करेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में. तो ये जो चार्ट पैटर्न्स है उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किए हुए. एक पार्ट 1 है जो हम कुछ पैटर्न्स है. सो देयर आर टोटल अबाउट 17-18 चार्ट पैटर्न्स जो आपको समझना है. सो आउट ऑफ 17-18 पैटर्न्स मैंने क्या किया, मैंने उसको दो ग्रुप्स में ब्रेक कर दिया है. सो वी विल डू फर्स्ट हाफ ऑफ द पैटर्न्स टुडे, और टुवर्ड्स द एंड कुछ एग्जांपल्स भी है जो हम देखेंगे आज के सेशन में, जहाँ पे आप आपका जो नॉलेज है उसको टेस्ट भी कर सकते हो. And then जो second part 2 है, so we'll have one more webinar again, and I think we'll be meeting quite frequently now with respect to webinars. So जो part 2 है chart patterns का, so we'll do that in the next webinar, ताकि ऐसा ना हो कि एक साथ हम पूरा एक patterns एक ही session में समझे. ठीक है, so let us start off with the chart patterns guys. Now before I start with chart patterns,
यहाँ पे कितने लोग हैं जो एक्चुअली चार्ट पैटर्न्स को यूज करते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए? सो हाउ मेनी ऑफ योर योर कितने लोग हैं जो एक्चुअली चार्ट पैटर्न्स, आपने काफी सारे पैटर्न्स के बारे में सुना होगा, डबल टॉप पैटर्न्स, ट्रिपल टॉप पैटर्न्स, ब्रॉडनिंग पैटर्न्स, फ्लैग एंड पोल पैटर्न्स, कप एंड हैंडल पैटर्न्स. So all these are like price based chart patterns. So before we get on to the details, so because हम हर एक चार्ट पैटर्न है उसको एकदम बारीकी से देखेंगे, so I have gotten a lot of examples today. हर एक पैटर्न का मैंने एक एग्जाम्पल, अलग अलग चार्ट्स के एग्जाम्पल मैंने इनकॉर्पोरेट करे ताकि आपको एक अच्छे तरीके से ये जो चार्ट पैटर्न्स है वो समझ में आए. I think Debashish ji is saying Debashish ji is using chart patterns. What about others, guys? Is there only one person in this live webinar? Yes, follow the bottom and then go for purchase. I think Satish ji is saying. What about others, guys? यहाँ पे कितने लोग हैं जो chart patterns use करते हैं? So let's keep the session interactive. इसको two way रखेंगे ताकि आपको भी मजा आए और सेशन थोड़ा लाइवली होगा, इंटरेक्टिव भी होगा. ठीक है, सो देयर बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई विल बी आस्किंग, सो आप वहाँ पे जवाब दे सकते हैं. सो व्हाटएवर यू कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. Great. So how many of y'all have been using chart patterns, guys? I can see only one. Debashish ji ने यहाँ पे हाँ बोला है. ठीक है, सो लेट अस, सो आज का एजेंडा क्या होगा? व्हाट इज इट दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे? सबसे पहला ये पैटर्न्स होता क्या है, पैटर्न्स बनते कैसे है, देन ये जो पैटर्न्स है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सो वी आर गोइंग टू लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ दीज पैटर्न्स. फिर देन देर आर 9 पैटर्न्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, जैसे डबल टॉप हो, डबल बॉटम हो, रेक्टेंगल पैटर्न्स हो. हर एक पैटर्न को एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे ताकि आपको समझने में काफी आसानी हो. एंड वो पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कैसे वो पैटर्न्स बनता है, कहाँ पे वो पैटर्न्स को देखना चाहिए, वो पैटर्न्स पे क्या होना चाहिए जिससे आप एंट्री ले सके. अगर एंट्री लेने पर उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, अगर स्टॉप लॉस लगा दिया तो एंट्री लेने पर उसका टारगेट कैसे डिसाइड किया जाता है. सो ऑल दीज थिंग्स इज व्हाट वील बी कवरिंग आज के सेशन में. Yeah, Raghavendra ji, I'll also suggest a literature towards the end. There is one book that I have जहाँ पे जो चार्ट पैटर्न्स है ना काफी एक्सटेंसिवली कवर हुआ है. सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन डेफिनेटली आई विल शेयर अबाउट दैट एज वेल. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट ऑफ विथ व्हाट इज अ पैटर्न. Yes, Carla ji. So the pattern is basically, अगर आपने देखा होगा, so can I say patterns is nothing but आप देखोगे ये जो प्राइस है उस पे कुछ लाइंस हम बनाते हैं. जैसे आपने देखा होगा एक ट्रेंड लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, फिर आपने देखा होगा एक कर्व्स होता है, राइट? सो बेसिकली पैटर्न क्या होता है? पैटर्न एक ऐसा होता है कि प्राइस पे या कुछ आप कुछ लाइंस अगर ड्रॉ कर देते हो या कुछ उसको कर्व्स कुछ ड्रॉ कर देते हो. So when you draw those lines and when you draw those curves, वो that turns into a pattern. So जैसे मैंने बोला, the lines that bind the price movement in a pattern, जैसे trend lines हो गया, support and resistance हो गया. So एक तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, जैसे हमने देखा कि एक या तो आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, या आपने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन ड्रॉ कर दिया, या आपने एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन ड्रॉ कर दिया. कभी कभी हम एक कप एंड हैंडल, अगर आपने सुना होगा, तो उसमें एक कर्व शेप पैटर्न भी हम बनाते हैं. सो एक तरह तरह के पैटर्न्स होते हैं. कभी कभी ऐसे पैरेलल लाइंस भी जाते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा ट्रायंगल लाइंस कन्वर्ज होते हैं, कभी कभी जो ट्रायंगल्स है वो डाइवर्ज भी होते हैं. सो जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है लाइंस का, कर्व्स का, दैट मेक्स इट इनटू अ पैटर्न. सो कर्व्स बेसिकली क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगा, ताकि एक कर्व के शेप में होगा. सो जैसे एक 180 डिग्री जैसे बोलते हैं उसको, एक कर्व शेप में भी होता है यहाँ पे. सो बेसिकली जो भी कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, कर्व्स का कॉम्बिनेशन हो या लाइंस का कॉम्बिनेशन हो, वो कॉम्बिनेशन को यूज करके ये जो है पैटर्न वो बनता है. अभी इसमें तरह तरह के पैटर्न्स आते हैं. कुछ पैटर्न्स में सिर्फ कर्व्स यूज होता है, कुछ पैटर्न्स में सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज होते हैं, अभी कुछ पैटर्न्स में ट्रेंड लाइंस यूज होते हैं, अभी कुछ पैटर्न्स में स्लोपिंग लाइंस भी यूज होते हैं. सो हम देखेंगे कि कौन सा पैटर्न में क्या यूज किया जाता है. ठीक है, ऑल गुड अंटिल नाउ? If you all can let me know in the chat box, is everyone with me?
If you all can just let me know guys in the chat box. Okay, great, super. चलो, जो सबसे पहला पैटर्न जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा एक डबल टॉप पैटर्न. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव हर्ड अबाउट दिस पैटर्न गाइस? इफ यू ऑल कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. डबल टॉप पैटर्न, क्या आपने ये डबल टॉप पैटर्न के बारे में सुना है? How many of you all are aware of double top pattern guys? If you all can let me know in the chat box. सो आउट ऑफ द 9 पैटर्न जो हम डिस्कस करेंगे, जो सबसे पहला पैटर्न जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पैटर्न का नाम है डबल टॉप पैटर्न. सो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस डबल टॉप पैटर्न गाइस? और अगर आपको मालूम है कि डबल टॉप पैटर्न क्या है, क्या आप मुझे आप बता सकते हो कि ये डबल टॉप पैटर्न होता कैसा है, दिखता कैसे है? सो यहाँ पे चैट बॉक्स है गाइस. इन द चैट बॉक्स यू ऑल कैन जस्ट कमेंट ऑन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो कि ये डबल टॉप पैटर्न होता क्या है. So I guess I am not seeing any response in the chat box here. In a week, 2 time downtrend. Okay, Satish ji is saying superb. So let's see. So double top में क्या होता है ना? See, there are 3 reversal points. So इसमें double top, जैसे नाम बोलता है double top. So there are 2 highs and those 2 highs are separated by a low. तो ये जो horizontal line बनता है और ये जो 2 हाई के बीच में जो एक लो होता है ना, उसको हम लोग नेकलाइन बोलते हैं. सो जब मैं एग्जांपल, जब भी चार्ट आएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ पे नाउ this is the chart on my screen here. So here you can see I have taken an example of a chart here. So here you can see this is the chart of IndusInd Bank. This is an historical chart of IndusInd Bank here. अब यहाँ पे आप देख रहे हो द प्राइस एक ट्रेंड पे चल रहा था. द प्राइस वेंट अप, इट वेंट डाउन, इट स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग हियर. यहाँ पे आप देख सकते हो द प्राइस मूव्ड अप एंड हियर आई मेंशन द प्राइस हैज मेड अ फर्स्ट टॉप. सबसे पहला टॉप यहाँ पे प्राइस ने बनाया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट टॉप बना के द प्राइस वेंट डाउन और यहाँ पे एक लो बनाया प्राइस ने और फिर से लो बना के प्राइस फिर से ऊपर की तरफ मूव कर गया यहाँ पे. और यहाँ पे आप देख रहे हो जो सेकंड टॉप बनाया है जो प्राइस ने, which is somewhere around the same area of where the first top was. अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट टॉप हो उसी का एकदम एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट पे ही होना चाहिए. इट कैन बी स्लाइटली सम पॉइंट्स अबव, सम पॉइंट्स बिलो, बट वो एक एरिया जो वो एक जोन है. सो ये जो 2 टॉप्स है दैट शुड बी प्रोबेबली अराउंड द सेम जोन योर. और ये जो 2 हाईज है उसके बीच में ये जो लो है, दिस लो इज कॉल्ड एज योर नेकलाइन. तो आप देखोगे नेकलाइन को मैंने यहाँ पे एक ब्लैक लाइन, एक ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ किया हुआ है. So that is what I've said. A double top consists of 3 reversal points, which is 2 highs separated by a low. इसका मतलब है यहाँ पे फर्स्ट टॉप है, फिर एक लो है और एक सेकंड टॉप है, and both these tops are separated by a low here. Now is the double top pattern clear guys? यहाँ पे 2 टॉप होना चाहिए और 2 टॉप के बीच में एक लो होना चाहिए. Now when do you buy a double top pattern? Usually a double top pattern ये bearish pattern है या एक bullish pattern है? If you all can comment in the chat box guys, what do you all think? ये जो double top pattern है, क्या ये bullish pattern है या क्या ये bearish pattern है? If you all can just comment in the chat box. Obviously now looking at the chart you can easily guess कि ये double top है, मतलब प्राइस ऊपर गया, एक टॉप बनाया, नीचे आया, देन फिर से ऊपर गया और एक टॉप बनाया. यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइस ने 2 बार कोशिश की है ये टॉप को ब्रीच करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली द प्राइस वाज नॉट एबल टू गो पास दैट टॉप. सो 2 बार रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आ गया. और यहाँ पे मैंने लिखा है नेवर बाय अंटिल अ ब्रेकआउट एज अकर्ड. मतलब जब तक, सो दिस नेकलाइन, ये जो नेकलाइन होता है डबल टॉप का, वो नेकलाइन के नीचे ब्रेकआउट होना चाहिए. काफी ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जैसे ही डबल टॉप दिखता है और जैसे ही थोड़ा सा रिवर्सल साइंस आ जाता है, दे एंटर इनटू दैट ट्रेड थिंकिंग कि यार ये डबल टॉप बन गया, चलो अभी हम लोग ट्रेड ले लेते हैं. सो रादर देन टेकिंग अ ट्रेड एट दिस ब्रेकआउट हियर, देयर आर सम ट्रेडर्स हु वुड प्रोबेबली एंटर हियर और हियर और हियर. सी अभी 2 चीज हो सकता है. अगर आपने अर्ली एंट्री ले लिया और प्राइस घूम गया तो शायद आपका नुकसान हो जाएगा, या आपने अर्ली एंट्री ले लिया और नेकलाइन के नीचे अगर ब्रेकडाउन दे दिया, देन प्रोबेबली chances are that you would make money on this. So my advice would be always wait until this breakout has occurred, because don't get into an early trade, because अभी तक वो डबल टॉप बना है, बट जब तक वो नेकलाइन के नीचे ब्रेकआउट नहीं आता है, we can't call it as a double top pattern here. Is that part clear? So you should never buy until a breakout has occurred.
एंड हाउ डू यू कैलकुलेट द टारगेट? अभी हमें ये पता चल गया कि डबल टॉप में दो टॉप होते हैं, इट इज सेपरेटेड बाय अ लो, ये नेकलाइन है, और जैसे ये नेकलाइन ब्रेकआउट, जैसे नेकलाइन के नीचे चला जाता है, दैट इज व्हेन वी एंटर इनटू अ सेल ट्रेड. But now when we enter into a sell trade, how do we calculate the target for this double top pattern? अब ये double top pattern का target कैसे calculate करेंगे? ये जो neckline है, can you all see this dotted line here? एक black dotted line है. यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो नेकलाइन का जो लो है और ये जो टॉप का ये जो हाई पॉइंट है, आई हैव कैप्चर्ड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस लो ऑफ द नेकलाइन एंड द हाई ऑफ दिस टॉप हियर. तो ये जो डिस्टेंस है नेकलाइन और टॉप का, वही डिस्टेंस आपको ये जो नेकलाइन का जो लो है वहां पे रख देना है, और ये जो आपका जो डिस्टेंस बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी योर मिनिमम टारगेट. मतलब जहां पे अगर आपने यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंटर कर दिया है सेल ट्रेड, इसका जो मिनिमम टारगेट होगा बेस्ड ऑन दैट पैटर्न विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस नेकलाइन एंड दिस टॉप. तो ये जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को आपको ये ब्रेकआउट जो हुआ है यहाँ पे नेकलाइन का जो लो है वहां पे रख देना है, और जो भी आपका जो टारगेट आता है, दिस इज वेयर यू शुड बी एग्जिटिंग फ्रॉम द ट्रेड योर. सो दिस इज वेयर यू वुड एंटर एट द ब्रेकआउट, दिस इज वेयर योर टारगेट वुड बी. नाउ एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि स्टॉप लॉस कहां पे रखे. जैसे आपने यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंटर ले लिया, योर स्टॉप लॉस कैन बी, ये जो हाई है, जो ब्रेकआउट कैंडल है, उसका जो हाई है एकदम एग्जैक्ट हाई पे मत रखना, थोड़ा सा इसको ऊपर रख देना यहाँ पे, मे बी 5-10 पॉइंट्स अवे फ्रॉम दिस हाई हियर. सो यू शुड हैव अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, बिकॉज आइडियली जैसे ही ब्रेकआउट होता है, यू वांट द प्राइस टू मूव इन योर फेवर एंड मूव वेरी क्विकली. सो ये जो हाई है, जो ब्रेकआउट कैंडल का हाई है, उसके बस थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस रख के, दिस इज द मिनिमम टारगेट दैट यू नीड टू अचीव इन द डबल टॉप पैटर्न. Is this part clear, guys? Is the double top pattern clear? If you all can give me a heads up in the chat box. Very easy pattern to understand, right? Double top. So there are two tops. ये जो दोनों टॉप है, it is separated by a low. और अगर आप लो से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वो आपका नेकलाइन हो गया. जैसे ही वो नेकलाइन ब्रेकआउट होता है, दैट इज व्हेन यू शुड बी एंटरिंग योर ट्रेड. और ये जो नेकलाइन का लो है और जो टॉप का हाई है, उस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को आप नेकलाइन से आपको मेजर करना है. सो नेकलाइन से आपको वो डिस्टेंस सबट्रैक्ट कर दोगे, सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये मिनिमम टारगेट कहाँ पे हो सकता है इस डबल टॉप पैटर्न का. Is this double top pattern clear, guys? If you all can let me know in the chat box. So before I go to the next pattern, I would want to understand from you guys कि आपको ये डबल टॉप पैटर्न का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं. बिकॉज वी एक क्विज भी है जो हम लोग पैटर्न डिस्कस करने के बाद करेंगे, सो दैट जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 30-40 मिनट्स में, बाद में पता चलेगा कि आपको ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं. इजी पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न. कैन आई गेट अ हेड्स अप फ्रॉम you guys in the chat box? I think only Raghavendra Kumar ji has given me a thumbs up. What about others, guys? Siddharth ji, Satish ji. ठीक है, so this is the double top pattern. चलो, now let's come to pattern number 2, जो इसी का एक extension है. Now can anyone tell me, डबल टॉप पैटर्न तो हमने देख लिया यहाँ पे कि दो हाई है विच इज सेपरेटेड बाय अ लो. नाउ कैन एनीवन टेल मी कि ट्रिपल टॉप पैटर्न कैसे दिखेगा? इट इज बेसिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू योर डबल टॉप पैटर्न, बट इसमें सिर्फ एक एक्सटेंशन है ट्रिपल टॉप पैटर्न में. सो कैन एनीवन टेल मी कि बेसिक डिफरेंस क्या होगा एक डबल टॉप पैटर्न में और एक ट्रिपल टॉप पैटर्न में? यू कैन जस्ट क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. सो आइडली कितना हाईज होना चाहिए ट्रिपल टॉप में और कितना लोज होना चाहिए? डबल टॉप में हमने देखा कि दो हाई है विच इज सेपरेटेड बाय अ सिंगल लो. सो नाउ कैन एनीवन टेल मी ट्रिपल टॉप में हाउ मेनी हाईज शुड बी देयर and it should be separated by how many lows? Let me see how many of you all can get this correct. Yes, Siddharth is saying 3 peaks. Superb, that's the right answer. And what about the trough? I mean the lows. Kitna lows hona chahiye? 1, 2 or 3? So there are only 3 options here. So triple top is exactly as Siddharth has mentioned, the number of touches to the support and resistance line being 3. Superb. जैसे मैंने यहाँ पे बताया, वेरी गुड राघवेंद्र जी, इट इज 2 lows. Superb. So each high in the top should be at the same level
एंड द मिडिल हाई कैन बी स्लाइटली लोअर देन द अदर टू. जैसे मैंने बोला कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि तीनों हाई एक ही लेवल पर होना चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो चलेगा, but you should be seeing a clear resistance zone here. So let me show you with the help of an example. And इसमें भी the target is calculated the same way. जो नेकलाइन और जो टॉप का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस को हम लोग नेकलाइन से सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपको हमारा मिनिमम टारगेट मिल जाएगा. Superb. So this is the chart of Marico Limited. It's an FMCG company that I have here. So look at this. I mean, such a beautiful chart here. So you can see the price was sideways. The price made the first top. यहाँ पे high बनाया price ने. फिर नीचे आ गया. So this was your first bottom. फिर price ऊपर चला गया यहाँ पे. Then you can see the price made a new top. So you can see this top was slightly higher than the previous one. But ठीक है, it is somewhere around that same zone. This is fine. Then the price came down. You can see there was a bottom two here. The price थोड़ा सा नीचे ऊपर चला गया. Then we had the third top here. Exactly. Yes, Devashish ji. The triple top pattern is even more stronger because here three times the price has tried to break the top, but it was unable to. और यहाँ पे आप देख रहे हो there is bottom one and bottom two, and there is top one, top two, and top three. So there are three highs which is supported by two lows. And this is your neckline. So here you can see ये जो लाल कलर का dotted line है, so that is the distance from the neckline to the top. You take the same distance and you subtract it from your neckline. So this is where your minimum target would be. Obviously वो minimum target के बाद भी और भी प्राइस गिरा है, but at that point of time हमें नहीं पता चलेगा कि ये minimum target के बाद और गिरने वाला है, और शायद एंट्री के टाइम में ये भी नहीं पता चलेगा कि ये पैटर्न सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा. सो दैट इज आल्सो समथिंग दैट you would need to see. But one interesting observation, okay, let me ask you this question. ट्रिपल टॉप पैटर्न अभी आपने देखा कि यहाँ पे थ्री हाईज है, टू लोज है, और जैसे ही ब्रेकआउट होता है दिस इज वेयर वी नीड टू एंटर. और ये जो डिस्टेंस है नेकलाइन और टॉप का, वो इसको हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा मिनिमम टारगेट हो जाएगा. नाउ जैसे आपने डिस्कस किया था कि हमें ट्रेड कब लेना चाहिए, जब ये नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है, दैट इज वेयर वी शुड बी एंटरिंग अवर ट्रेड. करेक्ट. अब ब्रेकआउट के साथ इफ यू वांट सम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कि आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए जिससे आपको लगेगा कि शायद ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो, बिकॉज उस टाइम पे पता नहीं चलेगा कि ये फिर से यहाँ पे अगले दिन से पुल बैक आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कि यहाँ से नीचे जाएगा. सी राइट नाउ हाइंडसाइट में हम लोग देखेंगे तो चार्ट्स इज लुकिंग गुड, बट एक्चुअली जब आप लाइव ट्रेड करोगे, लाइव चार्ट पैटर्न जब आप एनालाइज करोगे, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल बी रनिंग इन योर माइंड. ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, क्या फिर से बॉटम से ऊपर जाएगा. सो इफ यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, now there is one, if you want one extra confirmation to support that breakout, can you all tell me what is that one extra confirmation that you can look for? एक तो हो गया आपका पैटर्न रिकॉग्निशन, जिससे आपको पता चल गया कि ये ट्रिपल टॉप पैटर्न है, और आपने देख लिया यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो गया है. Now there is one extra confirmation that you can use to support that breakout and hope कि ये शायद ये जो पैटर्न है वो सक्सेसफुल रहे. So can you all tell me what is it that you should be looking along with the breakout here? If you can give me your answers in the chat box, guys. क्या हो सकता है कि वो ब्रेकआउट के साथ आप एक्स्ट्रा क्या देख सकते हो? I mean, it's okay. I mean, one extra confirmation. I think there is one hint that is easily visible on the chart here. आप देख सकते हो कि breakout के साथ there is one indicator that I have added at the bottom, which is your volume indicator. Can you all see जिस दिन ये breakout हुआ था neckline का यहाँ से, you call it as breakout or you call it as breakdown. Can you see that day the volume also surged here? Exactly. Raghvendra ji is saying, if the breakout is also supported by volume, so that is one additional thing जो आप देख सकते हो. अगर ब्रेकआउट के साथ अगर ये वॉल्यूम स्पाइक भी आ गया, then chances are that that trade can be successful. Again, हो सकता है कि ब्रेकआउट भी मिलने पर, वॉल्यूम भी और मिलने पर भी आपका ट्रेड सफल ना हो. तो इसके लिए जैसे ये ब्रेकआउट हो गया, थोड़ा सा ये जो हाई है उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा के ही चलना है. Is this triple top pattern clear, guys? If you all can let me know in the chat box. Easy. Double top patterns and triple top patterns, if you all can let me know in the chat box. I hope the pace is open, and I hope with the help of charts you are able to relate the patterns better.
क्लियर? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पैटर्न गाइस? सो हमने सबसे पहला देखा आपका डबल टॉप पैटर्न, फिर हमने देखा ट्रिपल टॉप. नाउ लेट्स गो टू, ये दोनों जो पैटर्न था वो आपका बेरिश पैटर्न था. नाउ लेट्स लुक एट अ कपल ऑफ बुलिश पैटर्न्स व्हिच विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दिस. जैसे एक डबल टॉप और ट्रिपल टॉप है, वैसे ही एक डबल बॉटम और एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न भी है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ. सो इफ वी लुक एट द डबल टॉप पैटर्न, now a double bottom pattern. So यहाँ पे I have taken an example of Sun Pharma. So जैसे double top में there were two highs separated by a low, double bottom में क्या होगा, there will be two lows and that will be separated by a high. So यहाँ पे दो लो होंगे और उसके बीच में एक हाई होगा and that high line will be your neckline, exactly opposite of your double top pattern. सो यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइस एक डाउन ट्रेंड में था, द प्राइस मेड अ बॉटम, इट वेंट अप, यहाँ पे एक हाई बनाया नेकलाइन, अगेन द प्राइस केम डाउन, इट वेंट अप, द प्राइस अगेन केम डाउन. यू कैन सी द सेकंड बॉटम वाज समवेयर इन द रेंज ऑफ द फर्स्ट बॉटम हियर. सो आइडियली यू कैन आल्सो कंसीडर दिस एज अ ट्रिपल बॉटम एज वेल. अगर आपने ये फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम, अगर ये फर्स्ट हाई सेकंड हाई को भी कंसिडर किया, सो यू कैन कंसिडर दिस पैटर्न एज अ ट्रिपल बॉटम एज वेल. बट let's say this is your first low, the price went up, it made a high, so this is your neckline, the price again came down, it made a low, it again went up here. So here you can see the price gave a breakout. So there are two bottoms which is divided, I mean iske beech mein, which is separated by a high here. और इसका like I said, इसका एंट्री कब होगा, जैसे ये ब्रेकआउट होता है, ऑलवेज वेट फॉर अ ब्रेकआउट टू एंटर. और इसका स्टॉप लॉस कहां पे होगा, जो कैंडल ब्रेकआउट किया है उसी के लो के नीचे, मतलब 5-10 पॉइंट्स बिलो द लो, दैट इज वेयर यू विल कीप योर स्टॉप लॉस. एंड इसका टारगेट कैसे मेजर करेंगे, सेम जो नेकलाइन और ये जो बॉटम का जो डिस्टेंस है, ये यू कैन सी द ब्लैक डॉटेड लाइन हियर. तो ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग नेकलाइन से ऐड कर देंगे एंड दिस इज वेयर वी गेट अवर मिनिमम टारगेट हियर. एग्जैक्टली सिमिलर कॉन्सेप्ट टू डबल टॉप. एक ही डिफरेंस है कि डबल टॉप इज अ बेरिश पैटर्न whereas double bottom is like a bullish pattern here. अगर आप देखोगे निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे, विल ऑल्सो सी दैट टुवर्ड्स द एंड. अगर आप देखोगे 22,780 के जोन में there are couple of bottoms that are made by nifties. Is there anyone who is tracking the nifty daily chart currently? Before I go to the next pattern, since we are discussing the double bottom pattern here, अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे, around 22,780 में you will find two double bottoms for Nifty. And how we analyze, how to learn about this group from which year? I didn't get your question, Karla ji. So you have to open any chart and then you have to see whether you are able to analyze these reversal points here. For anyone who is looking at the Nifty daily chart, अगर आप देखोगे Nifty daily chart पे there are two bottoms somewhere around 22,780 levels. It's just that we are waiting for that high to break out. So इसके लिए हम लोग बोल रहे कि at this point of time we can't say कि ये short term bottom है, क्या ये dead cat bounce है कि यहाँ से और गिर सकता है. So we need more confirmation on that. Great. So this is how your double bottom pattern is. And जैसे ये double bottom pattern है, triple bottom is exactly opposite of your triple top pattern. So this is an example of historical chart of DLF. So अगर आप देख सकते हो DLF already एक एक sideways trend पे था. So this was your first bottom. यहाँ पे लो मारा, फिर DLF ने हाई बनाया, then again लो हुआ, फिर से एक हाई बनाया, then फिर से एक लो हुआ, फिर से एक हाई बना. So you can see, sorry, this was first high, this is second high, first low, second low and third low. So here you can see there are three bottoms here which is separated by a two highs and this high is nothing but your neckline. अगर आप previous example देखोगे तो that was also more of similar to your triple bottom only. So this is low 1, low 2, low 3 and there are three lows which are separated by two highs. And ये जो high है that is your neckline. और जैसे ही ये breakout होता है, can you all see there is a volume spike happening along with the breakout? Can you all also see that along with the breakout there is also a volume spike that is happening here? So जैसे ये neckline और bottom का जो distance है उसी को आपको neckline से add करना है. That is how you'll get your minimum target.
और ये जो ब्रेकआउट है उसका लो के 5-10 पॉइंट्स के नीचे आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, बट ऑलवेज वेट अंटिल द ब्रेकआउट इज कंफर्म्ड. Is the triple bottom chart pattern clear, guys? If you all can let me know in the chat box. So यहाँ पे breakout भी हुआ है. The breakout was also supported by the volume spike here. Can I get a heads up from everyone in the chat box? Is everyone with me? So we have discussed 4 patterns until now, guys. One is double top, one is triple top, one is double bottom, and the other one is triple bottom. Are these 4 patterns absolutely clear? बहुत ही easy patterns है. I think if you know कि कैसे spot करना है, and those extra confirmations that we looked at, जैसे breakout के साथ volume spike भी हो, और इसका टारगेट्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये पैटर्न्स का स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते हैं, कब एंट्री लेना चाहिए, ऑलवेज वेट अंटिल द ब्रेकआउट हैज हैपेंड. इज दैट पार्ट क्लियर, गाइस? नाउ यू मे बी वंडरिंग वन थिंग, सर हमने देखा है कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर टाइम कोई पैटर्न बनने पर, ब्रेकआउट आने पर, वॉल्यूम कंफर्मेशन मिलने पर भी ऐसा बोल नहीं सकते कि ये पैटर्न वर्क करेगा या नहीं. अग्रीड. So there is one other technique that we are going. So for that, stock selection is very important. कि हो सकता है डीएलएफ में भी चलो एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न हो, बजाज फाइनेंस में भी एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न हो, चाहिए इन्फोसिस में भी एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न हो, या एक सन फार्मा में भी ट्रिपल बॉटम पैटर्न. नाउ यू हैव 4 डिफरेंट स्टॉक्स फ्रॉम 4 डिफरेंट सेक्टर्स. चारों में यही पैटर्न दिख रहा है, चारों में ब्रेकआउट है और चारों में वॉल्यूम स्पाइक भी है, बट जरूरी नहीं है कि वो चारों की चार चले. करेक्ट. हो सकता है आपने डीएलएफ आइडेंटिफाई किया, बट हो सकता है कोई और स्टॉक चले, एंड आपने जो ट्रेड लिया हो वो शायद वो लॉस पे चले जाए. आई मीन दैट पैटर्न वोंट वर्क इन दैट. सो फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा सेक्टर चल रहा है, और सेक्टर को कैसे एनालाइज करते हो, सेक्टर से हाउ डू वी पिक स्टॉक्स. So next one we'll be having one, separate webinar on one of the modern techniques, which is ratio charts. How many of you all are aware of ratio charts, guys? So with the help of ratio charts, I'll take you to all those historical examples where we have identified sector rotation cycles, and uske basis pe how you can shortlist stocks and then apply these chart patterns technique on that. Because if you just randomly apply any chart pattern, आपको शायद ये 50 स्टॉक में मिल जाए या 40 स्टॉक में मिल जाए, but you have to be, with at least with the right sector, if not the right stock at the right time. So how to do that? So we'll have a separate webinar on that. Is that part clear? So okay, chalo. So let's go to the 5th pattern here. Okay. Now there is another pattern which is called as the rectangle pattern here. So how many of you all are aware of this pattern, rectangle pattern? कितने लोग ये rectangle pattern के बारे में जानते हैं? If you all can let me know in the chat box. See, ideally, see, the time frame doesn't matter. So irrespective of the time frame, Satish ji, this patterns will work whether you are using 5 minutes, 10 minutes, or 15 minutes. Ideally, look for a higher time frame. Let's say 1 hour, 4 hours chart, 1 hour chart, 1 day chart. And ideally look for these patterns in a sector per se. So for example, if you are looking at the realty chart and if you are finding such patterns like this, then you can just zero down on these stocks here, because more or less there'll be some stocks that might just reflect as to what the sector is doing. Now rectangle, इसको हम लोग trading range भी बोलते हैं, इसको हम लोग एक box भी बोलते हैं. Basically what happens in a rectangle is that, see, it is basically इट्स बेसिकली आपका जो डबल बॉटम और सॉरी आपका जो ट्रिपल बॉटम और जो ट्रिपल टॉप था, विच इज सेपरेटेड बाय 2 हाइज एंड 2 लोज, राइट? रेक्टेंगल में क्या होगा? देयर बी हाई 1, हाई 2, हाई 3, एंड देयर बी लो 1, लो 2, लो 3. मतलब द प्राइस हैज टू मेक अ मिनिमम ऑफ 3 हाइज and minimum of 3 lows within the same range. So if you can see, there is one example of Kotak Bank here. There's an historical chart of Kotak Bank. It's a daily chart. So here you can see the price was in an uptrend. It consolidated, it moved up. The price made a high, then it came down, it made a low. The price again made a low here, it made a high. Again it came down, it made a high, again it made a low. So here you can see what has happened is, I said you need a minimum of 3 highs and a minimum of 3 lows. ऐसा कोई particular ये नहीं है कि 4 ही होना चाहिए, 5 highs होना चाहिए, 4 lows होना चाहिए. But you can clearly, can you all see that
Kotak Bank was trading in a range. So you can clearly see all the highs hai, jo three highs here that you can see here, it is almost around the same range. मतलब same area पे है. And if you also look at the bottoms, they are also probably around the same area here. So you can see high 1, high 2, high 3 almost around the same area. Low 1, low 2, low 3 almost around the same area. यहाँ पे थोड़ा सा dip हुआ, it went up, again it came up. And you can see यहाँ पे we got a breakout. And along with the breakout, you all can also see there was a volume spike as well. And again, how do we calculate the target? ये जो distance है between the top and the bottom, उसी का डिस्टेंस को आपको ये जो नेकलाइन है उस पे ऐड करना है एंड हियर यू हैव टू कैलकुलेट द मिनिमम टारगेट हियर. एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज मेड इन द साइडवेज मार्केट. जैसे देवशीष जी ने बोला यहाँ पे एग्जैक्टली यू नो जब भी आपको लगेगा कि ये स्टॉक या कोई सेक्टर एकदम फ्रस्ट्रेट कर रहा है, आपको एक ही रेंज पे मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल 100 is the resistance, 80 is the support, then again it goes to 100, again it comes to 79, again it goes to 101, again it goes to 79, again it goes to 101, again it comes to 80. So here you can see ऊपर 100 पे रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे 80 पे. द फाइनली द मोमेंट इट ब्रेक्स आउट अलोंग विद वॉल्यूम्स, दैट इज व्हेन आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये अपना जो साइडवेज ट्रेंड ब्रेक करके ऊपर जाएगा. So that is why you call it as a trading range, or you can also call it as a box pattern, because एक box shape में है. So you call it as a rectangle pattern या box pattern, or you can say trading range. You can call it as any name here. Is this clear? Clear? So triple top and triple bottom में there are 2 lows and 2 highs. So यहाँ पे you will have 3 highs and 3 lows, or maybe 4 highs and 4 lows, and it will be in a range. Is the rectangle part clear, guys? If you all can let me know in the chat box. Then I'll come to one interesting patterns here. Let me know if the 5 patterns are clear. So double top, double bottom, triple bottom, and your rectangle patterns. If you all can let me know in the chat box. Clear है boss, superb. चलो अब तक हमने जो भी पैटर्न्स देखा है ना, कैन यू ऑल सी वी हैव ओनली मेड हॉरिजॉन्टल लाइंस. आई आंसर योर क्वेश्चन देवशीष जी टुवर्ड्स द एंड में आपका एक आंसर करता हूं. हमने अब तक जो भी जो पैटर्न्स देखे, कैन आई से हमने एक स्ट्रेट लाइन ही यूज किया है, चाहे वो टॉप में हो चाहे वो बॉटम में हो. वी हैव ओनली यूज स्ट्रेट लाइंस, राइट. बट एक ऐसा भी होता है, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव हर्ड अबाउट ट्रायंगल पैटर्न्स? सो देर आर 3 ट्रायंगल पैटर्न्स. आपने सुना होगा एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और एक होता है आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स. अब तक हमने जितने भी चार्ट पैटर्न्स देखे उसमें वी वर यूजिंग स्ट्रेट लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस. नाउ इन द पैटर्न्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ट्रायंगल पैटर्न्स में वी आर गोइंग टू यूज स्लोपिंग लाइंस नाउ. मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगा और एक स्लोपिंग लाइन होगा, एक अपवर्ड स्लोपिंग होगा, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और एक दोनों वाला स्लोपिंग होगा. सो नाउ फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइंस वी आर मूविंग टू, अब ये पैरेलल लाइंस नहीं होगा, दिस विल बी स्लोपिंग लाइंस नाउ. सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ, सबसे पहला जो पैटर्न देखेंगे वो होगा आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है. So let me open up the example for the descending triangle pattern. So here I have taken an example of Mahindra and Mahindra. See, descending triangle pattern में क्या होता है ना? So the what is it that I've written here is when the lower bound is a horizontal support zone. मतलब इसमें जो lows होंगे ना, that will be a straight horizontal line, and the upper is a downward slanting trend line. मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये जो अपर लाइन है, so here you can see this black line, this is an upward slanting line here. So here you can see there is one high here, there is one high here, there is one high here. So here you can see the second high is lower than the first high, third high is lower than the second high here. So here you can see ये जो ऊपर का लाइन है ना, that is a downward sloping line, whereas ये जो नीचे का जो सपोर्ट जोन है, that is a straight horizontal line. और जैसे ये ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, एंड हाउ डू यू कैलकुलेट द डिस्टेंस, ये जो फर्स्ट हाई और ये जो फर्स्ट लो है, ये जो डिस्टेंस है, द फर्स्ट रिवर्सल पॉइंट एंड द फर्स्ट लो पॉइंट, सो यू हैव टू टेक दैट डिस्टेंस एंड देन जस्ट एड इट टू योर ब्रेकआउट लेवल योर. सो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है, सो दिस इज द कैंडल वेयर इट ब्रोक आउट. सो यू हैव टू ब्रेक आउट योर, एंड दिस इज वेयर द
minimum target is. So here you can see यहाँ पे now you might have a question कि descending triangle का जो breakout है, क्या वो जरूरी है कि वो ऊपर ही ब्रेकआउट हो या ये क्या ये नीचे भी ब्रेकआउट हो सकता है. सो यू हैव टू बी विद द डायरेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट. अगर हो सकता है ये ऊपर जाके फिर से नीचे आए, देन प्रोबेबली योर एंट्री शुड बी ऑन द डाउन साइड. बट अगर ये स्लैंटिंग लाइन है और ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो, सो योर यू कैन सी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया, फिर से थ्रो बैक हुआ, देन अगेन वी हैड अ nice rally here and then it went up. And here you can see the minimum target is the distance between the first reversal point and the first low point here. So that is how you calculate the minimum target. और जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है उसके जो लो पॉइंट है वहां पे थोड़ा सा नीचे, दिस इज वेयर यू कैन कीप योर stop loss. Is that part clear, guys? Is the descending triangle part clear? If you all can let me know in the chat box. Is the descending triangle pattern clear, guys? Before I go to the next couple of patterns, let me know, guys, in the chat box. Simple to understand descending triangles में, so जो lower zone है, so you need to have support around one area, and ये जो highs होगा, you need to have a downward sloping trend line. The upper bounds has to be a downward sloping line. मतलब एक basically एक lower high formation चाहिए. This high should be lower than the first and this high should be lower than the second here. So a downward sloping trend line and followed by a horizontal support line here. So this was your descending triangle pattern. Now let us look at how does your ascending triangle pattern look like. अब असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है ना, इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ योर डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न. सो हियर आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ हिस्टोरिकल चार्ट ऑफ कल्याण ज्वेलर्स. सो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो डिसेंडिंग में द अपवर्ड वाज स्लोपिंग एंड द डाउनवर्ड वाज अ स्ट्रेट लाइन, whereas ascending में it's exactly the opposite. So your ये जो upper bound है that will be a straight line, whereas ये जो downward है that has to be a sloping line here. So here you need to have a higher low formation. So here you can see the second low is higher than the first low and the third low is higher than the second low here. So इसमें जो downward bound है that has to be upward sloping, और ये जो highs है that has to be your horizontal resistance line. And the moment it breaks down, this is your breakout. So you calculate the distance between the first high and the first low and you put it here, you subtract it from your breakout zone, and this is how you get your minimum target. और जैसे आप breakout करते हो just थोड़ा सा ऊपर, this is where you don't keep your stop loss extremely at this high, but just keep your stop loss just about जो breakout है just उसके थोड़ा सा ऊपर, just give some leeway for the stop loss here. How to identify ascending patterns? ये ascending patterns में सुजीत जी आपको ये जो resistance है that has to be in the same area, it has to be a straight line, but ये जो downward है you need to see a higher low formation. So here you can see ये जो second low है which is higher than the first, and ये जो third low है this is higher than the second. So नीचे ऊपर से straight और नीचे से ऐसे sloping. So this is how you identify an ascending triangle pattern. So ऊपर एक straight line होगा, नीचे से you need to have an upward sloping line. Clear? Great. Now let us come to symmetrical triangle. इसको हम लोग coil भी बोलते हैं और isosceles triangle भी बोलते हैं. Anyone has any idea how does an isosceles triangle look like? Can we identify using this scanner? See, there are scanners that identify such patterns. But honestly speaking, आपको शायद वो स्टॉक्स भी मिल जाएगा, बट वो एग्जैक्टली आपको जैसे टेक्स्ट बुक पैटर्न्स है वैसे आपको नहीं दिखेगा. बट मे बी यू कैन लुक एट चार्टिंग और दीज प्लेटफॉर्म्स. इवन आई हैव ट्राइड यूजिंग देम, बट मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पैटर्न्स. बिकॉज the way they connect the patterns is slightly different. You do get the stocks, but then ultimately it's up to you to look at the charts and identify कि ये patterns कैसे दिखा जाता है. I've seen some places where they have created scanners, but it's very difficult to create chart pattern scanners like this. मतलब आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि वो लोग कुछ ना एक लो पॉइंट हाई पॉइंट कनेक्ट करके they might give a stock,
but then ultimately you have to see whether they have done it right or no, because your way of looking at the patterns might be slightly different than how they look at it. So symmetrical triangle is one of the easiest patterns. So इसमें ascending and descending में हमने देखा था कि one is a straight line and one is a sloping line, correct? Descending में हमने देखा था कि the downward is a straight line and upward is a sloping line, whereas ascending में हमने देखा था कि upward is a straight line and the downward is a sloping line here. But symmetrical triangle में क्या होता है ना, both converge together, दोनों इसमें sloping lines होते हैं. So let me show you with the help of an example. So this is an historical chart of Asian Paints. So here you can see the price went up. So here you can see this is a high, this is a high, and this is high. So here you can see this is downward sloping. You can see a lower high formation. Similarly, this is a low, this is a low, and this is a. So you can see there is a higher swing low formation as well. So lower swing high, higher swing low. Both of them are sloping together, and that breakout should be supported by the volume spike as well. And इसका target जैसे ये first high or first low है, so you take that distance and you add it to the breakout, and that is how you get your minimum target here. So this is how your symmetrical triangle pattern looks like. Is the symmetrical triangle pattern clear, guys? All the three triangle patterns are clear: ascending, descending, and symmetrical. अच्छा, इसके बाद अभी एक quiz भी आने वाला है. There is one more pattern that we will cover. So we have covered 8 patterns: a double top, double bottom, triple bottom, rectangle. Then we have covered descending triangle, ascending triangle, and symmetrical triangle. Then there is one last pattern that we will cover, and then we will have a quiz session. So where I will just keep the charts in front of you, and you have to identify whether you are able to spot any patterns or no. Okay. Then there is something called as broadening patterns, guys. Anyone is aware of what broadening patterns are? If you all can let me know in the chat box. Any idea, guys? I mean, wrong answers are completely fine. Anyone who has heard about broadening patterns? आपने सुना होगा शायद एक मेगाफोन पैटर्न होता है, वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट. Raizada ji is saying how to double top patterns. See, double top में Raizada ji had covered it in the beginning. अभी डबल टॉप में वो जो टॉप और वो जो नेकलाइन है उसका जो डिस्टेंस आपको मेजर करना पड़ेगा, और वो डिस्टेंस को आपको नेकलाइन से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. Okay, I'll just go back to my previous slides, guys. I just wanted to answer Raizada ji's query. Raizada ji is saying double top mein. Raizada ji, this is the chart for you. So here you can see there is first top and the second top here, and then there is a neckline. Correct? Acha, how to do it in triangles? Okay, you want it in triangles? Okay. Let me show you in triangles. So जो first high point है राइज़ादा जी, the first high point, the first reversal point and the low point, जो first high और जो first low है उसका जो distance है, वो distance को you can see this red dotted line here. You have to take the distance from the first high and the first low, and you just have to add it from the breakout level here. So you can see this red dotted line. First high or first low का distance लेके just keep it at this breakout here, and you will get the minimum target for the descending triangle. Exactly similar thing you will do it for ascending as well. ये जो first high है और जो first low है, take that distance. So here you can see the red dotted line and keep it at the breakout level. तो यहाँ पे आपको ये distance मिल जाएगा. इसको पहला ये distance mark करना है आपको, फिर उसको ही control C करके you need to control V. तो line आपको आ जाएगा minimum target. And symmetrical triangle में same, the first high and the first low का जो distance है, this red line, take that distance and keep it at the breakout. So this red dotted line, this is where the minimum target is. Clear, Raizada ji? I hope now, I mean, you might understand how to get the targets for the triangle patterns. Okay, now coming to broadening patterns, इसमें आपने देखा होगा एक megaphone pattern बोलते हैं इसको, एक funnel pattern बोलते हैं. Then there is reverse triangle, inverted triangle, you call whatever it is. ये बहुत ही rare है और बहुत difficult भी है. Now this is how the broadening patterns look like. Now can anyone tell me, guys, what is the difference between broadening patterns and symmetrical triangle patterns? अभी हमने just symmetrical triangle देखा और यहाँ पे आप देख रहे हो broadening patterns भी है.
Can anyone tell me what is the difference between a broadening pattern and a symmetrical triangle pattern? So if you are able to look at the charts, probably you might have an answer for this. कैन एनीवन टेल मी कि आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है ब्रॉडनिंग पैटर्न्स में और सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स में? कैन आई से बोथ द स्लोपिंग लाइंस वर कन्वर्जिंग, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा था, नीचे वाला भी ऊपर जा रहा था. बट ब्रॉडनिंग पैटर्न्स में क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर जाता है, नीचे वाला नीचे जाता है. So here you can see upward rising. The second high is higher than the first high. So you can see there is an upward rising. Exactly. It's like a mouth widening. So the upward bound keeps going higher and the downward bound also keeps going low. इसमें क्या होता है ना, आपका जो ब्रेकआउट है वो काफी आपको ऊपर मिलेगा. Whereas सिमेट्रिकल में वो कन्वर्ज होके नीचे से वो ऊपर जाता है. ब्रॉडनिंग में ऑलरेडी वो the levels are so higher and you need to have a breakout above those levels. So here you can see there is a higher high, there is a lower low. So here you need to have, at least you need to have a minimum of 2 highs and minimum of 2 lows. और ये जो लो पॉइंट है और ये जो हाई पॉइंट है उसका डिस्टेंस, ये जो रेड डॉटेड लाइन है उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट योर मिनिमम टारगेट. एक्सट्रीमली रेयर टू फाइंड एंड इट्स आल्सो वेरी डिफिकल्ट. आई मीन जितना आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स, डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न्स दिखते हैं उतना आपको शायद ब्रॉडनिंग पैटर्न्स नहीं मिलेंगे. सो दिस वाज अबाउट द ब्रॉडनिंग पैटर्न्स गाइस. ठीक है, सो आर यू ऑल रेडी टू टेस्ट योर नॉलेज? सो वील हैव अ क्विक 10 minutes ऑफ क्विज सेशन. तो हमने जितने भी 9 पैटर्न्स देखे. सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप द चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई वुड request you all if you can spot the patterns that we had discussed. ये जो 9 patterns जो हमने सीखा है उसी पर ही होगा ये. So are you all ready for this guys? If you all can let me know in the chat box. If you all can let me know guys before we start. See, broadening patterns can be bearish, it can be bullish as well. Depends on which side you get a breakout rise जी. ऊपर की तरफ आपको ब्रेकआउट मिलता है तो बुलिश, बट अगर आपको नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो वो बेरिश हो जाएगा. ठीक है, एंड इट गोज द सेम विद सिमेट्रिकल, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड ब्रॉडनिंग. ऑल दीज पैटर्न्स डिपेंड्स ऑन which साइड द प्राइस ब्रेक्स आउट, whether it's on the higher side or whether it's on the lower side here. Chalo, now let's start with a quick quiz guys. So this is the first pattern here. So look at this chart carefully. This is the historical chart of Zentech. I'll give you one hint. Look for a pattern probably on the right side of my screen. So you can look for some patterns at the right side of my screen and see if you are able to spot any of the 9 patterns that we had discussed here. So I'll see, let's see how many of y'all get it right. So there is one hint. See if you can spot any pattern towards the right hand side of my screen. Sujit Kumar ji is saying double top. Banu ji is also saying double top. Okay, I can understand double top. Are you all mentioning about this area? The one that I'm keeping my cursor on. So you can see the second eye is not really in the same zone of the first eye here. But if you go slightly deeper, I think you will probably unearth one more pattern here. Okay, let me show it for you. Does this look like a symmetrical triangle pattern, guys? I think this is what we had mentioned as double top, right? I considered it as symmetrical triangle because I felt the second high is not at the same level at this high, but okay. Triple top, okay, if you are considering this high, this high, and this high, ideally, if you see, it looks more like a symmetrical triangle pattern. So here you can see there is one high or there is one high, there is one low. So you can see there is an upward sloping and downward sloping, and then there was a symmetrical triangle breakdown here. Nevertheless, that's fine. I mean, wrong answers are fine. I think if you're calling it as double top, see, ideally look for double top and triple tops maybe एक same area में होना चाहिए. I mean, that is something that you can look at, but nevertheless, it's fine. Chalo, chart number 2, guys. This is the historical chart of rate gain. Okay, so the hint is somewhere at the center of my screen, guys. Let's see if you can spot any pattern, because spotting pattern in the live market is a challenge. एक बार आप चार्ट्स में हमने देख लिया वो ठीक है, बट if
You open a chart and whether you are able to see a pattern, that is where the real challenge is. Ascending triangle, not really, Sujitji. This is somewhere in this period is where I'm looking at. See, triple top, ideally, cup and handle low. Raizada ji, cup and handle. Nahi. Okay, fine. Let me show you this. How about this, guys? Do you see a double bottom pattern? So I was talking about, so there's one bottom here, there is one bottom here, there is a neckline. It's a double bottom, guys. Banoji, not triple top. See, triple top में three tops, दो low होना चाहिए, नीचे जाना चाहिए. So here you can see there is one bottom here, there is one more bottom here. Siddharth, you can more or less you can call it as a rectangular breakout as well. So I was referring to this zone where there is one bottom, second bottom, and then there's a neckline, and then there's a breakout. Or breakout, okay, यहाँ से throwback भी आया. It retested that same level, and then the price moved up from here. So more like a double bottom pattern. ठीक है, चलो chart number 3, guys. This is the historical chart of DB Realty. How many of y'all can spot a pattern here? देवाशीष जी, सिद्धार्थ जी, बानो जी, रायजादा जी, सुजीत कुमार जी. डीबी रियल्टी का चार्ट है. I think now you should be somewhere on the left hand side, somewhere in the month of Feb and March. Feb and March 24, somewhere around this area is where I want you all to look at the patterns. Can you all spot any patterns here? I think this should be the easiest of the patterns that we had discussed. Any guesses, guys? Which pattern is this? Yeah, I think Raizada ji has got it right. Yes, I was ascending. Yeah, guys, you can also call it as ascending. I think I'm assuming you would have taken this slope and you would have considered this high. Yeah, you can do it that as well. So what I considered was this was a double top here, then there was this neckline. If I had considered a sloping line, I would have considered as an ascending triangle as well. You can triple top ke liye, there are no two lows here, Siddhaji. So I would probably consider this as a double top. So here I can see there is one high, second high. It is separated by a low here. So more like a double top is where you can get it. Okay, guys, chart number 4. This is the historical chart of Greenply. This is a one-day chart. Now can you all spot the pattern here? So this is somewhere around 2023. This is the area that I'm looking at. Come on, guys. I think I'm expecting you guys to answer this. And I'm expecting that everyone gives me the right answer for this. This is 2023. Probably one of the easiest, patterns to follow. Satish Kumar ji is saying rectangle chart. Others, you want to take a guess? Satish ji is saying rectangle pattern. Sujit ji is also rectangle pattern. Superb. Yeah, that was the pattern that I was referring at. So you can clearly see there is the congestion area here, couple of highs around this zone. There's a lot of lows around this zone. And the moment it broke out with this volume spike, so that is the rectangle pattern. Yeah, box pattern. Yes, Sujit ji. And the last example for the day, guys. So this is the historical chart of Ujjivan Small Finance Bank. Somewhere in the mid of this screen here, if you can. So I'll give you one hint. This is one of the 3 triangle patterns that we had discussed. So if you can spot any pattern here, ideally before the fall that happened in this period, that is from Feb to April, there is this one pattern that I could see here. Great. I think Sujit Kumar ji has got the grip for the charts now. Sujit Kumar ji is saying ascending triangle. Okay, what about others? Anyone else who wants to take a guess? Yes, I think Sujit Kumar ji has got it right. So here you can see the highs are probably in the same area, and you can see a downward sloping line. So it broke out, it gave a retest, and you can see from that same retest it went down again.
So that is the ascending triangle pattern. I think Raghavendra ji had asked me in the beginning if there is any good resource. So, there was this trader named Thomas N. Bulkowski. So probably, the books that he has written on chart patterns, they are by far the most researched and the most detailed. So, he also has a website. So if you can just go to www.thepatternSite.com. So this trader, he analyzed over 700 stocks over 10 years on a daily basis across different market conditions. एंड ही लिस्टेड डाउन द रिजल्ट्स. हम आपको साइट में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पैटर्न का क्या एक्यूरेसी है, कितना चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाई किया है. And if you want to read more about chart patterns in detail, I mean, you can find, I think somebody, Raghavendra ji, you had asked me for literature on this. I think you can, look out for some books written by Thomas N. Bulkowski. So probably, he's covered almost all the chart patterns that you would want to know. बट अगर ये भी चार्ट पैटर्न्स आपको समझ में आया हो, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ. सो दिस इज लाइक जस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ चार्ट पैटर्न्स. we'll also have one more chart patterns webinar probably next month, जहाँ पे हम लोग flag and pole, cup and handle, wedge, falling wedge, rising wedge, all these patterns is what we'll cover in that webinar. ठीक है. I hope it was a good session today, guys. I hope you had a productive last 1 hour with me on the chart patterns. I hope. So what is your feedback on this? Did you all like the session today? Was this informative with respect to the chart patterns? I think now the next webinar, so I'll be doing one webinar on the 27th of Feb. That is next day after Shivratri. So we have an holiday on 26th of Feb. So 27th of Feb from 4 to 5, there is one webinar that I'll be doing on hedging using futures. But there is one other important announcement that I'd like to make is, probably from next week onwards, guys, I'll be meeting you all very frequently. So we'll be having webinars daily during the market hours. So somewhere between 12:30 to 1 o'clock, this will be a mid-market webinar. So it will be a live session that, we'll be doing. So I'll be there. Technical and derivative desk head, Mr. Sudeep Shah, will also be there. And also I'll have my colleague Gautam, will be, doing this session. So you'll get a, communication regarding that. So I just wanted to, keep you all posted. So probably next Tuesday onwards, it should start. So every day during the live market for, 30 odd minutes, we'll be meeting daily, wherein we look at what Nifty is doing, what Bank Nifty is doing, what Sensex is doing, which sectors are doing well. Then if you have any queries, you can ask me that in the live market as well. So you will be, getting communication regarding the same. And I hope you all join for those webinars as well. Okay. Hedging from futures will happen on 27th of Feb. That is from 4 to 5. So you can keep following the SBI Securities YouTube channel, guys, for more such updates. Okay. And probably we'll be again meeting next week, Tuesday onwards. So it'll be a daily mid-market session. So we'll be meeting from 12:30 to 1. I hope you guys join that session as well. Thank you, guys. Thank you for your time. I hope you had a great session. So we have 2 days left for the week, Thursday. So tomorrow is Nifty's expiry day. And then we have Friday. I hope you have a profitable trading day ahead, guys. See you guys soon next week for the mid-market sessions, and hopefully on 27th for the webinar on hedging with futures. Bye, guys. Take care. Stay safe, and see you all soon.